यस बोलो मैम 7 एग्जाम्स डिले होंगे या वही 7 से ही रहेंगे ना? नहीं वही रहेगा 7 to 16 नथिंग नो डेट्स इज गोइंग टू चेंज नो डेट्स एट ऑल 7 to 16 जो है आपका बोर्ड थियरी एग्जाम रहेगा एंड दैट टू यूनिवर्सिटी इज टेलिंग इट इज completely offline exam in the previous news it was like 50-50 now yesterday I read it is completely offline subjective type of questions so mentally students be prepared you will have to come to college for giving the offline exams but still we are waiting for the final circular which we should get it from the university so far it is coming in the news only जो मैं आपको बोल रही हूँ आपको न्यूज़पेपर में इजीली मिल जाएगा हिंदुस्तान टाइम्स एंड ऑल दैट एक फाइनल रिटर्न सर्कुलर जो है जो हमारे हाथ में आना चाहिए वो अभी तक हमें नहीं मिला है यूनिवर्सिटी से ठीक है वो एक बार आ जाएगा देन इट इज फुल एंड फाइनल ओके मैम मैम और केमिस्ट्री में 5 ही एक्सपेरिमेंट है ना या और है? यस दैट विस्कोसिटी वाज द लास्ट एक्सपेरिमेंट वो कब आएगा वो जल्द से जल्द आएगा हो सकता है ये वीक में ही आ जाए अभी तो सिर्फ न्यूज में आ रहा है तो सर्कुलर भी आ जाएगा ये वीक में आना ही चाहिए बिकॉज नेक्स्ट वीक योर टर्म इज एंडिंग teaching learning is ending on 25th then from maybe 27th or 28th your unit test 2 is there with then follow up 2nd March your this oral practical viva of mechanics is scheduled 2nd March Nawaz sir will inform you about this then 2nd March ke baad maybe 3rd 4th or 5th March your BEE oral viva practical will be there and your term work submission in that week सारे प्रैक्टिकल सब कुछ आप लिख के रखो ठीक है और जो है पूरे प्रैक्टिकल्स अभी हमारे हो चुके हैं तो नाउ वी हैव टू कंडक्ट वन प्रैक्टिकल बेस्ड टेस्ट ठीक है जिसके लिए हमने गूगल फॉर्म रेडी किया है ऑलरेडी दैट असाइनमेंट इज रेडी ओके इट विल बी ऑनलाइन एग्जाम आपको बस वो करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करके लिखना है एमसीक्यूज एंड इट इज समवॉट केस स्टडी टाइप आल्सो where you have to think and write so that will be done I'll inform you about this maybe by today evening ठीक है तो वो हो गया तो वो हमारे पास आ गया आपको कुछ रिटर्न वर्क नहीं करना है बस 5 प्रैक्टिकल्स का रिटर्न वर्क है ठीक है उसमें मैम हमें प्रैक्टिकल ऐड करना है व्हाट गूगल फॉर्म में हमें बस अपने प्रैक्टिकल्स ऐड करना है कौन से गूगल फॉर्म में नहीं 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 वो एक प्रैक्टिकल बेस्ड टेस्ट रहेगा आपको कोई प्रैक्टिकल्स ऐड नहीं करना है ऑलरेडी आपने गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दिया है ना यस मैम नाउ यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग दैट इज द प्रैक्टिकल जो 5 प्रैक्टिकल्स आपने किया है उसके ऊपर बेस्ड वो टेस्ट रहेगा ठीक है ओके मैम so as we are doing this molecular orbital theory these are the different postulates of MOT where the first postulate tells us or informs us very clearly that a molecule is formed by the combination of atoms okay and this combination of atom is done by the formation of a bond between the two atoms then the second point says that all the atomic orbitals of the participating atoms they combine to form equal number of new orbitals. These new orbitals we call it as molecular orbital. Okay. Then these atomic orbitals which are combining with each other, they have same energy levels and same symmetry. But when these molecular orbitals they are formed, the atomic orbitals lose their identity. Okay. Then atoms that have atomic orbitals with one nucleus, they are called as molecular orbitals with n number of nucleus, that is nuclei. These molecules, they are called as polycentric. Moving on with the next postulate. Now, when these atomic orbitals combine, to form the molecular orbitals, they
अननेसेसरी के सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो एटम के हैं वो सारे के सारे कंबाइन करके बॉन्ड ही अच्छे से फॉर्म कर रहे, नो, उनमें भी कैटेगरीज है. There are certain molecular orbitals which form correct and proper bond. They are called as bonding molecular orbital. The second category is anti-bonding molecular orbital. And the third category is non-bonding molecular orbital. Okay. Bonding molecular orbital, they have lower energy, and anti-bonding molecular orbital, they have higher energy. Higher energy hai, so they will do something different and they will form anti-bonding molecular orbitals. ठीक है. अब ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, या फिर नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है, they have to be expressed in some way or the other. So the best way to express these molecular orbitals is quantum mechanical wave functions. ओके. तो यहाँ से हम ये देखेंगे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को एक्सप्रेस करना, वेदर वो बॉन्डिंग है, वेदर वो एंटी बॉन्डिंग है, वेदर वो नॉन बॉन्डिंग है, उनको हम क्वांटम नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे. ठीक है. बट filling up of electrons in the molecular orbitals will follow the same principle, that is Auber's principle, Hund's rule of maximum multiplicity, and Pauli's exclusion principle. Means filling up of electrons, whether वो atomic orbital है, whether वो molecular orbital है, filling up of electrons will be done as per these three principles only. But ये molecular orbital को express कैसे करेंगे हम? We will express it in terms of quantum mechanical wave function, which is associated with a set of quantum numbers. Okay. So students, write down the first point, first and the second point. Let me know after completion. First, Done? no, no, first of Just first और second point सब मत लिखो, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रही हूँ. Now here onwards, molecular orbitals are of three types: bonding, anti-bonding and non-bonding. बॉन्डिंग क्या है, एंटी बॉन्डिंग क्या है, नॉन बॉन्डिंग क्या है, वो सब हम क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन के थ्रू पढ़ेंगे. ठीक है. और हाँ, एक और चीज, कल से आपके लेक्चर्स जो है ना 9:15 से शुरू होंगे. One minute, let me just stop that. Resume. Now, moving further with these three principles, जो atomic orbital में principle follow हो रहा था, that is orbitals with the lowest energy will be filled first. The same principle will be followed in molecular orbital theory also. Then Pauli's exclusion principle says that an orbital can occupy maximum 2 number of electrons, but with opposite spins. Then Hund's rule of maximum multiplicity says that when there are several MOs, molecular orbitals with same energy, the electrons occupy the molecular orbitals one at a time before two electrons occupy the same molecular orbital. इसका meaning क्या है? जैसे कि same type of molecular orbital होगा, जैसे कि same type of atomic orbital था, px, py and pz. तो एक एक इलेक्ट्रॉन जो है px, py, pz चीज यहाँ पर भी फॉलो होगी.
अगर सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहेगा, ठीक है, तो one electron will be occupied in each and every molecular orbital, and then the pairing will be done. ठीक है, so all this whatever we have studied, the postulates, all these has to be explained graphically. मतलब उसका कोई तो एक representation होना चाहिए, ठीक है. So that representation can be done by two different methods. The first method is linear combination of atomic orbitals, which is also called as LCAO method, and the second one is united atom method. But we will be studying the first one. Okay, just write down the last point. The last point. So with these postulates keeping in our mind, now we will study with the linear combination of atomic orbitals by quantum mechanics wave function. Yes, bolo. Now this LCAO method, the atomic orbitals, now over here, they, what is happening? Yes, Ma'am, please show the last point. it is LCAO method, beta. The last point. Now we will study in deeply what is LCAO method in terms of quantum mechanics only. हाँ, अब जो atomic orbitals का जो था, जहाँ पे electrons filling used to take place, we showed everywhere it is SPDF, 1s, 2s, then 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, that way. Now, in terms of quantum mechanics wave function, we are going to represent the wave function as the atomic orbitals. Okay, which in turn is actually showing me the amplitude of the electron waves. Okay, so when the electrons occupy the molecular orbitals, it has to be represented by wave function. Wave function means psi. आप quantum mechanics पढ़ रहे हो physics में? Are you studying? Yeah. Yes, ma'am. Huh. So it's just similar, yeah, it is just similar to that only. Over here, it says that the atomic orbitals, they are expressed as wave functions. Wave function actually हमें क्या show करता है? Wave function हमें show करता है amplitude of the electron waves, how they are occupying the different orbitals. Okay, so over here, according to LCAO method, the molecular orbitals are formed by the linear combination of atomic orbitals of the molecule. मतलब जितने भी molecular orbitals form हो रहे हैं, they are being formed by the combination. Okay, ये combination जरूरी नहीं है कि plus addition ही हो. It can be addition, it can be subtraction of the atomic orbitals. So if the atomic orbitals, if the atomic orbitals, they are combining by addition method, then these atomic orbitals are written as psi b, which are bonding molecular orbitals, which are of lower energy. I repeat once again over here, just pay attention on the slide. If psi a, which is capital A, is the atomic orbital of atom A, okay, and psi b, which is capital B, if it is the atomic orbital of atom B, and if A and B atom combine, okay, if A and B atom combine, तो उनका atomic orbital भी combine होगा, which is psi A and psi B. So if they combine, that is if they add up, okay, if they add up, then जो उससे new orbital form होगा, जो कि molecular orbital है, वो molecular orbital अगर add होके form हो रहा है, then it is called as
bonding molecular orbital. And this bonding molecular orbital is written as psi b. Okay? Similarly, if atomic orbital of atom A is subtracting from the atomic orbital of atom B, तो उससे जो न्यू ऑर्बिटल फॉर्म होगा, ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इससे जो न्यू ऑर्बिटल फॉर्म होगा वो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन इज गिवन एज साई ए. ठीक है, तो इस तरीके से बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो फॉर्म होते हैं उनको रिप्रेजेंट कैसे करना है, psi small b which is equal to psi a plus psi b which is capital A and capital B of atom A and B. ठीक है, psi a which is small a which is the wave function of antibonding molecular orbital is written as psi a minus psi which is the atomic orbital of atom A and atom B. Followed everyone? So this is how we are going to write it further. Please write down the last point. By combining the atomic orbital A and B, we get two molecular orbitals. Write down from there. Let me know after completion. And write very carefully. Psi b is the wave function of bonding molecular orbital. Psi a is the wave function of anti-bonding molecular orbital. Done? अब जो भी हमने पढ़ा है वो पढ़ा है, अभी उनको कहीं ना कहीं हमें शो करना है कि एक्चुअली हम कैसे इलेक्ट्रॉन्स को वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एंटर करेंगे, उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, एंटी बॉन्डिंग और थर्ड भी कैटेगरी है नॉन बॉन्डिंग, इनको शो करना होगा. तो वो शो करने के लिए देयर इज वन स्पेसिफिक डायग्राम व्हिच इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी दिखाएंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी दिखाएंगे और नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी दिखाएंगे. ठीक है, पर एक उसका एक जनरल स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन अभी देख लेते हैं. डन विद दिस? Yes. Yeah. Now this is the representation. This is called as molecular orbital diagram, जहां पे हमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिखाना है, जहां पे हमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी दिखाना है. अब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसका एनर्जी ज्यादा रहेगा, ठीक है, वो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. यहाँ पे हमने पीछे की स्लाइड में पढ़ा था, मुझे आपको थोड़ा पीछे लेके जाने दो. ओवर हियर, bonding orbit molecular orbitals, they are formed by addition. किसका addition? Atomic orbital of atom A and B. ठीक है, so they are of lower energy. ठीक है, anti-bonding molecular orbital, they are formed by subtraction of atomic orbital of atom A and B. So they are of higher energy. अब ये lower energy higher energy को show कैसे करना है? वही है. So जब हम बोलते हैं they are of higher energy always give rise to a repulsive state. ठीक है, तो जो molecular orbital जिसका energy ज्यादा रहेगा, it is actually formed by repulsion.
that is subtraction, and it is called as anti-bonding molecular orbital psi A. Okay. Then the molecular orbital with lower energy give rise to an attractive state which is formed by the addition. Okay. So addition leads to the attractive state. रिपल्सिव स्टेट है तो एनर्जी बोलेंगे हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ठीक है. अट्रैक्टिव स्टेट है जो कि एडिशन से फॉर्म हुआ है विच इज ऑफ लोअर एनर्जी, इसको बोलेंगे हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो जो लो एनर्जी का है वो नीचे रहेगा, ठीक है, ग्राउंड लेवल जिसको बोलते हैं, और जो हाई एनर्जी है वो कहाँ रहेगा, at a excited level. So bonding molecular orbital is of lower energy. How to show it is of lower energy? By placing it in a downward position. An anti-bonding molecular orbital is of higher energy, तो उसको higher level पे show करना है. ठीक है. अब ये जो साई बी है, साई ए है, जो कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग है, ये फॉर्म कहाँ से होते हैं? ये फॉर्म होते हैं by combination of atomic orbitals of atom A and B. तो उनको भी शो करना है कि ये कॉम्बिनेशन से हुए, whether it is addition or subtraction, तो उसको हम यहाँ पे शो करेंगे. AO जो लिखा है ना, AO is nothing but your atomic orbital. ठीक है. और यहाँ पर भी दूसरे साइड में भी शो किया है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है. ये एटॉमिक साई ए कैपिटल ए, psi A, capital A is atomic orbital of atom A, which is combining with the atomic orbital of another atom B, which is written as psi B. तो एक तरफ एटम A बताना है और एक तरफ एटम B बताना है. वो एटम A हम कैसे बताएंगे, उसका एटॉमिक ऑर्बिटल लिखिए जो कि psi A है और जो कि psi B है. ठीक है. अब एनर्जी इंक्रीज हो रही है, राइट, क्योंकि वो हायर एनर्जी में जा रहा है, तो एनर्जी को इंक्रीजिंग फॉर्म में दिखाना है. तो यहाँ पे आप एक अपवर्ड एरो पे देख सकते हो जहाँ पे E लिखा है, दैट इज एक्चुअली द इंक्रीजिंग एनर्जी. psi B, which is small b, is lower energy orbital. psi A is of higher energy orbital. ये आपने पहले पढ़ा है लोअर क्लासेस में, MOT theory. Yes, ma'am. ये था. Please do this figure. Ma'am, draw only this figure or that 2 Yeah, points. we have to draw. You have to draw. Previous slide you have to raise it. Let me know after completing. Huh? Ma'am, वो diagram please. Draw the diagram very correctly. Huh? First bonding first, it is addition with the bonding, subtraction with the anti-bonding. Anti-bonding with the psi A and bonding with the psi B. Small a small b, anti-bonding bonding. आणि त्याच्यानंतर psi capital A म्हणजे atomic orbital of atomic orbital of atomic orbital of atom. Yes, done. Yes, ma'am. Shall we proceed? Now, with this information, we will proceed little bit further
on knowing the better or having the better understanding of bonding and anti-bonding molecular orbital. क्यों इनको bonding बोला जा रहा है, क्यों इनमें subtraction दिखाया जा रहा है, क्यों इनमें addition दिखाया जा रहा है, ये चीज हम पढ़ेंगे. अब अल्टीमेटली ये हो क्या रहा है, ये जो भी हो रहा है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो फॉर्म हो रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन से हो रहे हैं. किसके कॉम्बिनेशन से हो रहे हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एटम ए एंड बी. ठीक है. Mansi, please mute yourself. So how we are going to study it further? Now, when we talk about wave functions, and there is a trough. Positive sign, trough carries negative sign. This is actually the property of wave only. ठीक है. जब भी एक wave हम लिखते हैं तो उसके पास एक crest भी रहता है और एक trough भी रहता है, which is a property of wave function psi. Crest जो है it is of positive sign और trough जो है it is of negative sign. So molecular orbitals, they are formed by either addition or subtraction of atomic orbitals. यानी कि when crests combine, there is positive sign, that is addition, and when troughs combine, there is a plus minus sign with it, which is actually represented by wave function psi. There is formation of bonding molecular orbitals. O. जब हम बोलते हैं ये addition है, तो ये किस तरीके का addition है? BMO is formed by the combination or addition of atomic orbitals with the same sign. This is most important. Okay, and that is why they are of lower energy. It is written over here, when the atomic orbitals of the same sign they combine, their wave functions are also in the same phase. So when the wave functions are in the same phase, what happens is जो molecular orbital form होता है is of lower energy because it is in the same phase, and such molecular orbital we call it as bonding molecular orbital. That means उनका जो electron waves है वो same phase में है, वो same side में है, and that is why this positive sign is there. Okay, over here it is given जैसे कि 1s orbital है. 1s orbital is the orbital of say atom A and atom B. ये जब combine होगा, ये addition form में combine होगा to form a bonding molecular orbital of this type. So दोनों भी 1s orbital जो है वो positive sign के हैं और वो दोनों जब combine करते हैं तो वो overall is giving us a positive sign. That means the molecular orbital, उनका जो electron waves है, they are in the same phase, they are in the positive side. Okay, जैसे कि s orbital is always represented spherically. ठीक है, तो ये 1s orbital of atom A is combining or adding with 1s orbital of atom B. ये जो डॉटेड है, ये जो डॉट देख रहे हो आप ऑर्बिटल में, ये न्यूक्लियस है. ठीक है, और उनका साइन क्या है? प्लस और प्लस, दोनों भी 1s ऑर्बिटल का. So when they combine or when they overlap with each other by addition form, we get a molecular orbital. ठीक है, उनका दोनों का न्यूक्लियस also they meet with one another, overall giving it a positive bonding molecular orbital with multiple nucleus in it, which we call it as nuclei. So that's the reason atom is monocentric and molecule is polycentric with n number of nucleus in it. Followed everyone? समझा यहाँ Yes, तक? ma'am. Yes, ma'am. Then actually speaking तो इनका इलेक्ट्रॉन अभी तो मैंने एक ही ऑर्बिटल दिखाया है, ऐसे 2s ऑर्बिटल भी है, 2p ऑर्बिटल्स भी है, इनका भी कॉम्बिनेशन हो रहा है. So what, no matter what type of combination it is, where are the electrons? Electrons को कहाँ ढूंढे हम? This is the region where there is maximum or greater probability of finding up of electrons over here, where
In this molecular orbital, the region between the two nuclei is the place where there is overlap of the orbital taking place, and this is the place where we can find the electrons up to a maximum extent. Followed everyone? Okay, so just एक स्लाइड पीछे मैं आपको वापस लेके जा रही हूँ. जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है, ये जो 1s orbital of positive sign with one nucleus combines with 1s orbital with positive sign with one nucleus of other atom, what happens is BMO is formed, which is of positive sign, which is consisting of nuclei in it. तो ये जो न्यूक्लियाई के बीच में का जो डिस्टेंस है, this is the area where we can find the maximum number of electrons over here. Okay, how there is an electron density or electron cloud or developed between these two nucleus of the bonding molecular orbital. So this is what is written over here, okay, in this manner. So this is all about bonding molecular orbital. Okay, just do this diagram. The rest diagrams are there in the notes. So let's do the electron density diagram. Ma'am, what is this diagram name? Electron? Finding up, that is the greater probability of electrons in this region between the two nucleus. हम बोलते हैं ना एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो फॉर्म हुआ, लेकिन इनका इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, अगर इनको प्रॉपर्ली इनका स्टडीज किया जाए तो ये इलेक्ट्रॉन है कहाँ, ये इलेक्ट्रॉन वो दो न्यूक्लियस के बीच में है, वहां पे सबसे ज्यादा टेंडेंसी उसकी बाइंडिंग की है, सबसे ज्यादा जो है एक्सटेंट जो है जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को ढूंढ सकते हैं वो है ये एरिया. तो जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का शॉर्ट नोट आएगा तो आपको ये डायग्राम भी करना है और आपको ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लाउड भी शो करना है. डन. एक सिंपल सा डायग्राम बनाना है जहाँ पे आपको वो now moving on Yes. to anti bonding molecular orbital. ठीक है, now anti bonding molecular, हेलो मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. हाँ, now moving on to anti bonding molecular orbital. ये anti bonding molecular orbital, how they are formed, can anyone tell me? Ma'am, by subtraction of the atomic orbitals. Atomic orbitals of atom A and B. ठीक है, ये A and B, सब्ट्रैक्शन yes. है. I यस, minus तो I. ये सब्ट्रैक्शन है, मतलब क्या, जो एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ए है अगर वो प्लस साइन का है तो वो कंबाइन कर रहा है एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एटम बी जिसका माइनस साइन है. ठीक है, जैसे कि हमने अभी वेव फंक्शन से पढ़ा क्रेस्ट और ट्रफ. तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर. द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ ऑपोजिट साइन they combine. So when they combine they form molecular orbital, but ये इनका ये molecular orbital जो form हुआ है उसका जो wave function है psi a, it is out of the phase, मतलब जो region में होना चाहिए वो region में नहीं है, उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा है कि वो region से हट के वो कहीं और आगे चला गया. ठीक है, समझ में आया? So when this happens, when atomic orbitals of two different signs, देखिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, when they combine they give rise to anti-bonding molecular orbital which is of higher energy, जिसका wave function जो है opposite directions में जा रहा है. ये opposite direction दिखाने के लिए एक को हम प्लस दिखाते हैं, दूसरे को हम माइनस दिखाते हैं. आप देख सकते हो ये फिगर में कॉम्बिनेशन ऑफ टू 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स बाय सब्ट्रैक्शन. एक क्रेस्ट है तो दूसरा ट्रफ है, बराबर, और दोनों के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है. ठीक है, तो वो लेकिन जो फॉर्म होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इट इज ऑफ हायर एनर्जी
Of course, it is got nucleus in it, n number of nucleus in it, but then it is of higher energy, जिसका वेव फंक्शन जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है. तो दो लोग जब ऑपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं तो क्या वो सेम रीजन में रहते हैं? ऑफ कोर्स नॉट. So they are out of the phase, because they are having two different sign over here. Can you see this example? This is 1s orbital of one atom, and this is 1s orbital of the other atom, but they are subtracting. So when they subtract, this is how it is formed. Plus is moving in another direction, minus is moving in another direction. So this is called as anti-bonding molecular orbital. And this is where do we find the electrons? Can anyone tell me? These electrons are in those regions where they are not under the attraction of both the nuclei. ठीक है, जहां पे पूरा कंप्लीटली रिपल्शन हो, वहां जहां कंप्लीटली रिपल्शन हो, वहां पे आप ये इलेक्ट्रॉन्स को देख सकते हैं. वहां पे उनका एक्सटेंट है, वहां पे उनकी डेंसिटी ज्यादा है. और बॉन्डिंग में कहा था इलेक्ट्रॉन्स? बिटवीन द टू न्यूक्लियर वेयर देयर वाज मैक्सिमम अट्रैक्शन. वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था, वहां पे इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी थी फाइंड करने. एंटी बॉन्डिंग में इट इज जस्ट द ऑपोजिट. वहां जहां रिपल्शन ज्यादा हो, ठीक है, वहां पे हम इलेक्ट्रॉन को फाइंड कर सकते हैं. प्लीज डू दिस डायग्राम. Write on the heading and do this diagram. So in antibonding molecular orbital, the electrons are in those regions in space where they are not under the attraction of both the nuclei. Please do this. मैम आप रिपीट करोगे क्या बोला आपने? कहाँ से रिपीट करना है? ये मैम यही पॉइंट है. यही पॉइंट ना. अभी हमने क्या देखा कि ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स दे सब्ट्रैक्ट एंड दे फॉर्म एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. जब ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो एक ऑर्बिटल का न्यूक्लियस और दूसरे ऑर्बिटल का न्यूक्लियस, इनमें जरा भी अट्रैक्शन नहीं है, इनमें सिर्फ रिपल्शन है. तो इनमें अगर रिपल्शन है तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर है? इलेक्ट्रॉन्स वो एरिया में है जहाँ पे सबसे ज्यादा रिपल्शन है, दोनों न्यूक्लियस के बीच में. समझ में आया? ठीक है. बॉन्डिंग में क्या था? जहां दोनों न्यूक्लियस में सबसे ज्यादा जहां अट्रैक्शन था, वहां इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबिलिटी थी. पर यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में कहा है, क्या कह रहे हैं कि वो दोनों न्यूक्लियस में जितना ज्यादा रिपल्शन होगा, तो ज्यादा रिपल्शन जो एरिया में होगा वहां पे आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे. ठीक है, अब बॉन्डिंग समझा? में अट्रैक्शन और एंटी बॉन्डिंग में रिपल्शन ना मैम? रिपल्शन, वहां. यस, वहां. Shall we move on further? So this is all about bonding and anti-bonding molecular orbitals. Now, what are the conditions? How we are going to fill up the electrons for the combination of atomic orbital? The first condition is what? Same. What is the same condition? The energies of combining atomic orbitals should be same or nearly same. यानी कि 1s orbital of one atom will combine with another 1s orbital. ठीक है, तो 1s will combine with 1s only. 1s cannot combine with the 2s because 2s is of higher energy. ठीक है, समझ में आया? यानी कि सेम एनर्जी ऑर्बिटल से कॉम्बिनेशन होगा. रूल नंबर 1. ठीक है, दिस इज द कंडीशन. सेकेंड कंडीशन क्या कहता है? द कॉम्बाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल शुड पॉजेस सेम सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस. मतलब क्या? 2pz ऑर्बिटल कैन कंबाइन विद 2pz, क्योंकि वो उसका जो सिमेट्री है इट इज अलोंग द z एक्सिस. ठीक है, 2px का सिमेट्री इज x एक्सिस एंड 2py का y एक्सिस. तो 2pz का जो सिमेट्री है इट विल कंबाइन विद द 2pz ऑर्बिटल ऑफ द अदर एटम ओनली.
ये एक 2pz ऑर्बिटल है तो दूसरा 2px ऑर्बिटल होगा, ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं होगा क्योंकि दोनों की सिमेट्री अलग है, एक z एक्सिस है तो एक y एक्सिस है. Followed. The third condition is the combining atomic orbital must overlap to ज्यादा इंटेंसिटी से होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस एरिया में हमें मिलेगा, whether it is attraction, whether it is repulsion between the nuclei of molecular orbitals. ठीक है, तो जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स है एक एटम के, they should see to it that they are combining with the atomic orbitals of the atom B up to a maximum and greatest extent. Whether it is by attraction, that is addition, or subtraction, that is a different story. लेकिन जितना इंटेंसिफाई ये ओवरलैपिंग रहेगा, कॉम्बिनेशन रहेगा, उतना ज्यादा हम इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड कर सकते हैं उस एरिया में. समझ में आया? Followed everyone? So these are the three different conditions of combination of atomic orbitals. Okay? Is it clear to you all? Please read it once. Yes. Yeah, 1s orbital of one atom will combine with 1s orbital of the other atom. ऐसे नहीं होगा 1s will combine with 2s. First year student cannot go and sit with the final year student for studies. Not possible. ठीक है? Group studies are always done between the same class level. Similarly, symmetry. 2pz orbital का एक symmetry है along z axis, so it will combine with the other 2pz orbital of other. But 2pz will never combine with 2px or 2py. Third condition is what? Maximum overlapping should take place so that more intensity, the greater density of finding of the electron between the nuclei of molecular orbital. So here we complete with the introduction and description of molecular orbitals. Okay? Next lecture, we will be studying what are actually, if we are telling bonding molecular orbital, anti-bonding molecular orbital, जहाँ पे हमें उनको शो करना पड़ेगा वो दिखते कैसे, उनको एक नाम देना होगा, जो कि जिग्मा पाई और जिग्मा ऑर्बिटल्स है, पाई ऑर्बिटल्स है, जिनको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं, उनको हम रिप्रेजेंट करके इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग करेंगे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम. But this we will do it in the next lecture. Okay, let me take a